Hello. Now, exercise 1.2, question number 1, and it is check the injectivity and the surjectivity of the following functions. There is 1 and surjective means onto. Here our first one is function f is given from n to n and it's defined by fx equal to x square. So first for 1 let x1 x2 belongs to n, that is domain of function, such that f of x1 is equal to f of x2. Now because of formula fx is x square, so f of x1 is x1 square and f of x2 is x2 square, and therefore x1 square minus x2 square is equal to 0. So you can say x1 minus x2, this one is not 11, no? It is x1 minus x2 into x1 plus x2 is equal to 0. So x1 minus x2 is equal to 0, or x1 plus x2 is equal to 0, but this case is not possible. Why? Because x1 and x2 both are natural number, so addition of two natural number cannot be 0, and so from first one x1 minus x2 equal to 0, so x1 equal to x2, तो fx1 इक्वल टू fx2, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और हमने प्रूव किया x1 इक्वल टू x2, इट मींस द फंक्शन इज 1 बराबर, ये फंक्शन है वो 1 है, मतलब कि इंजेक्टिव है. ओके, अब सब्जेक्टिव चेक करने के लिए यहाँ पर आपको जो डोमेन दिया गया है वो है आपके लिए n, दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर. तो जब हमको डोमेन n या तो z दिया जाएगा तो हम रेंज फाइंड कर लेंगे और वहां से डिसाइड करेंगे कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है. ओके, तो सबसे पहले x का वैल्यू 1 सिलेक्ट करते हैं. तो अगर आप x का वैल्यू 1 सिलेक्ट करेंगे तो f1 1 स्क्वायर 1, then x equal to 2, x equal to 2, then f of 2 is 2 square, that is 4, x equal to 3, then f of 3 is equal to 3 square, that is 9, x equal to 4, then f of 4 is 4 square, that is 16, and continuous. So range of a function is 1, 4, 9, 16, that is perfect square. What is codomain? Here codomain is given n, so it is not n, means यहाँ पर ऐसा कोई भी डोमेन में आपका नंबर नहीं है जो आपको √2 आंसर देगा. ऐसा भी कोई नंबर नहीं है जिसका इमेज 3 होगा. सो हर एक नंबर हमारे कोडोमेन का इमेज नहीं बन सकता. So range of function is not same as codomain of a function, and therefore we say this one is not onto. बराबर, ये function onto नहीं है. तो first one, yes it is 1 but it is not onto. Next one, number 2, and here number 2 is a function from z to z and given by fx equal to x square. So number 2, f is from z to z and formula is given fx equal to x square. Now if I select x1 as a -1, then f of -1, that is -1 square, -1 square is 1, and second number x2 as a 1, then f of 1 is 1 square, 1 square is equal to 1. So here you can see x1 and x2 are different, but answer, that is f of x1, is same as f of x2. In both answer is 1, and so we can say this function is not 1 because here numbers are different but images are same. Okay, अब यहाँ पर भी हम डोमेन ऑफ फंक्शन है वो हमको z दिया गया है, तो यहाँ पर भी हम रेंज फाइंड कर लेंगे और चेक करेंगे कि क्या रेंज जो है वो एग्जैक्टली एज अ कोडोमेन है या नहीं.
So domain of function is z, and it is -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, and so on. So we start from -3. So if x equal to -3, यहाँ से आगे भी नंबर चलेंगे, x equal to -3, then f of -3 is -3 square, -3 square is 9. Then if we select -2, then f of -2 is -2 square, -2 square is 4. Then if I select x equal to -1, then f of -1 is -1 square is equal to 1. Then if we select 0, then f of 0 is 0 square, 0 square is 0, x equal to 1. Then f of 1 is 1 square is equal to 1. If I select one more, x equal to 2, then f of 2 is 2 square, 2 square is 4, and so on. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका रेंज आया है उसमें एक भी आंसर नेगेटिव तो है ही नहीं। तो हमारे जो जेड है कोडोमेन में नेगेटिव नंबर होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, तो वो तो किसी का इमेज ही नहीं है। इट मींस इट इज नॉट सब्जेक्टिव। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं रेंज ऑफ फंक्शन इज व्हाट 0 1 then 4 and then 9 and so on, but it is not exactly same as our codomain of a function, and so this function is not onto। बराबर, तो ये यहाँ पर हमने नॉट 1 1 प्रूव किया बाय काउंटर एग्जांपल, एंड रेंज फाइंड करके हमने डिसाइड किया कि हमारा जो कोडोमेन है एंड रेंज है वो डिफरेंट है, तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। मूविंग ऑन, थर्ड वन। नाउ थर्ड वन इज function from R to R. Third one is a function from R to R, and here fx is given x square. So again, let x1 equal to -1 and x2 is equal to 1. So f of -1 that is -1 square is equal to 1, and f of 1 is 1 square. 1 square is also 1, so here you can see x1 and x2 are different, but f of x1 that is f of -1 and f of x2 that is f of 1 are same, and so we can say this function is not 1 1 because pre-images are different but image is same, so it is not 1 1. Now for onto, एक तो आप डायरेक्टली रेंज से बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर आपको याद है तो ये क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर स्क्वायर फंक्शन है, इसका रेंज होता है क्लोज फ्रॉम 0 ओपन फ्रॉम इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस वन इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, and therefore range of a function is closed from 0 open from infinite. Here what is codomain? Codomain is given R, so this one is not same as our codomain R, and so this function is not onto। बराबर, ये फंक्शन ना तो 1 1 है ना तो ये onto फंक्शन है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 4, एंड इन नंबर 4 it is given fourth one, function is from n to n and it is defined by fx is equal to x cube. Now let for 1 1 let x1 and x2 belongs to n such that f of x1 is equal to f of x2. F of x1 cube, because formula is fx equal to x cube. So f of x1 is x1 cube, f of x2 is x2 cube. Because of x1 and x2 are natural number, so we can say apply 1/3 power in left and right, and then we get x1 equal to x2. So fx1 equal to fx2 implies x1 equal to x2, and therefore f is 1 1 function. Okay, अब
ऑन टू के लिए। तो वापस यहाँ पर हमको डोमेन दिया गया है n, तो हम रेंज फाइंड कर लेंगे। तो डोमेन ऑफ फंक्शन इज n, 1 2 3 4 and so on. If we take x equal to 1, then f of 1 is 1 cube 1. Then x equal to 2, x equal to 2, so f2 is 2 cube is equal to 8. Then x equal to 3, f of 3 is 3 cube, 3 cube is 27, and so on. So range of function is 1 8 27, then 64 and so on. कोडोमेन क्या दिया गया है आपको? n. So it is not n because इसमें आप देख सकते हैं 2 3 4 5 6 7 ये नंबर्स नहीं है आपके रेंज में, मीन्स कि 2 किसी का भी इमेज नहीं है, बराबर। तो दिस वन इज नॉट सेम एज अवर कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन, एंड सो वी से दिस फंक्शन इज not onto. This one is not onto because range and codomain are different. Moving on, fifth one. And fifth one is function from z to z and given by fx equal to x cube. So for that, let x1 x2 belongs to z such that f of x1 is equal to f of x2. Now f of x1 is x1 cube because fx is x cube, that's the formula. So fx1 is x1 cube and f of x2 is x2 cube. Because x1 and x2 belongs to z, so we are taking cube root in left and right, and therefore x1 equal to x2. So fx1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2, and therefore we can say f is 1 1. अगर यहाँ पर हमको फंक्शन फ्रॉम r टू r दिया जाता तो फिर हम x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब में दोनों साइड क्यूब रूट डायरेक्टली नहीं लेते, उस टाइम हम फॉर्मूला यूज करते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बराबर, और फिर उसका यूज करके प्रूव करते हैं। बट यहाँ पर हमको z दिया गया है तो इसलिए हमने डायरेक्टली x1 इक्वल टू x2 लिखा है। So yes, this function is 1 1. Now again here domain of function is given z. तो जब भी हमको n या तो z दिया जाएगा, हम ऑन टू प्रूव करने के लिए ज्यादातर रेंज फाइंड कर लेंगे, बराबर। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 and so on. Now we start from f of -3. तो f of -3 is -3 cube. -3 cube is -27. Then f of -2 is -2 cube. -2 cube is -8. तो आप देख सकते हैं -27 से डायरेक्टली आप -8 पे आए हैं, मतलब बीच में बहुत सारे नंबर आपके इंटीजर्स बाकी रह गए, तो ये फंक्शन डेफिनेटली ऑन टू नहीं होगा। f of -1 मतलब -1 क्यूब, -1 क्यूब इज -1, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बीच में आपने बहुत सारे नंबर को जंप करके डायरेक्टली -1 पे आ गए। f of 0, this one is 0. f of 0 cube, it is 0. f of 1 is 1 cube 1. Then f of 2 is 2 cube 8 and so on. So what is range of function? So here range of function is -27 -8 -1 0 1 and so on, but here codomain is given z. So this one is not z. जैसे मैं बोल रहा था कि बहुत सारे नंबर आपने बीच में छोड़े हैं, 1 के बाद डायरेक्टली आप 8 पे आ चुके हैं, इसका मतलब ऐसा कोई इंटीजर आपके पास नहीं है जो आपको 2 एज अ इमेज दे सके। ओके, अगर ये r होता तो हम बोलते यस दिस फंक्शन इज ऑन टू, but right now it is z to z. So it is not same as our codomain of a function, that is z, and so we can say this function is not onto, बराबर। अगर यहाँ पर फंक्शन
R2R होता तो fx इक्वल टू एक्स क्यूब, इसके लिए ये ऑन टू फंक्शन हो जाता, बराबर। ओके, चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। And the next question for us is question number 3, and question number 3 is fx, prove that greatest integer function f from R to R given by fx equal to greatest integer function, जिसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, is neither 1 1 नॉर ऑन टू। आपको ये प्रूव करना है कि ये ना तो 1 1 है ना तो ये ऑन टू है। ओके, तो हम ऑलरेडी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन जानते हैं। लेट x1 इज इक्वल टू 0.4 and x2 is equal to 0.5. So these two numbers are different. Now f of x1 that is floor of 0.4 या तो greatest integer part of 0.4, so it will be 0, and f of x2 greatest integer of 0.5, so it is 0. So here numbers are different, x1 and x2 are different, but f of x1 and f of x2, that is images are same, and so what we say, function is not 1 1, ये function 1 1 नहीं है। ओके, अब इसका रेंज ज्यादातर हमको पता है कि ये जो इस यहाँ पर बोला गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो डेफिनेटली इनके आंसर इंटीजर ही आएंगे, तो इनका रेंज जेड ही होता है। बट फिर भी अगर हम जनरल में इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नंबर लेते हैं n which is integer. Now n belongs to z, x is real number because function is from R to R, x is real number, n is in z, so there are three possibilities. One, x is less than n. Second possibility, x is more than your n, बराबर, n is any integer, तो x is less than n, greater than, or maybe x and n are equal. So there are total three possibilities, right? Now ये जो हम n है ना वो x के नियर सिलेक्ट करेंगे, बराबर। ये ऐसा नहीं कि x का वैल्यू 10 है और हमने n ले लिया 100, ऐसा नहीं भाई, उसके नियर में जो इंटीजर है वो, क्योंकि आप जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन भी। So here x is less than n, near to n, and x is real number, so it is between n minus 1 and n, and if x is between n minus 1 and n, then answer of greatest integer function is n minus 1. If your x is more than n but it is near to n, जो x है वो near to n है, तो वो जो नंबर है वो बिटवीन n and n plus 1 होगा, एंड बिटवीन n and n plus 1 होगा, that time greatest integer function give n, and if x is exactly same as n, then also your answer is n. तो आपका जो आंसर है वो या तो n है जो कि एक इंटीजर है, या तो फिर n minus 1, तो इंटीजर माइनस इंटीजर इज ऑल्सो इंटीजर, तो आपका जो आंसर है वो आंसर क्या आ जाएगा, ऑलवेज इंटीजर होगा। इज रेंज ऑफ फंक्शन इज जेड, एंड हियर व्हाट इज कोडोमेन, कोडोमेन इज गिवन r, तो कोडोमेन ऑफ फंक्शन इज गिवन r, so these two are not same, and therefore we can say this function is not onto. Fourth one, f from R to R given by fx equal to modulus of x, so fx is given modulus of x is neither 1 1 and nor onto. Here modulus x is given x if x is positive or 0, तो इन्होंने डेफिनेशन ऑलरेडी आपको दे दिया है, x if x greater than equal to 0 and minus x if x less than 0.
ये जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, पीसवाइज फंक्शन। हाँ, डिफरेंट डेफिनेशन है ना एफ एक्स की। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए अलग डेफिनेशन, एक्स लेस देन जीरो के लिए अलग डेफिनेशन। तो यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं है, सबके लिए एक डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन अलग अलग पार्ट में है, तो इसको पीसवाइज फंक्शन बोलते हैं। ओके, अब आपको प्रूव करना है ये फंक्शन ना तो वन वन है ना तो ये ऑन टू है। तो हम क्या करेंगे, x1 इक्वल टू -1 ले लेते हैं। तो अगर आप x1 इक्वल टू -1 लेंगे तो f of x1 that is f of -1, f of -1 is what? So here definition is, if the number is less than 0 then your answer is minus of x. So -1 is less than 0, so we write minus of -1, and minus of -1 is +1. Then we select another number 1, f of x2, that is f of 1. Now 1 is already greater than 0. So if the number is greater than 0, then your answer is x, means number itself, so equal to 1. So x1 and x2 are different, but f of x1 is same as f of x2, and therefore we can say the function is not 1 1. बराबर। अब रेंज ऑफ अ फंक्शन, तो ऑलरेडी आप जानते ही होंगे मॉड्यूलस ऑफ एक्स का रेंज, ये एलिमेंट्री फंक्शन है, नॉर्मली सब जानते हैं मॉड्यूलस एक्स 11th स्टैंडर्ड से। ओके, तो रेंज ऑफ फंक्शन इज क्लोज फ्रॉम जीरो, ओपन फ्रॉम इनफाइनाइट। हियर व्हाट इज कोडोमेन? कोडोमेन इज गिवन R. So this one is not same as our codomain of function, and so this one is not on to। बराबर। चलो, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5, and it is function f from R to R given by fx equal to 1 if x greater than 0, 0 if x equal to 0, and -1 if x less than 0। साइनम फंक्शन है, आपको प्रूव करना है नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। बराबर, सिर्फ ये साइन डिसाइड करेगा। तो यहां से हम दो नंबर लेते हैं, x1 1, x2 2। Here you can see x1 and x2 are different. Now f of x1, so f of 1, definition is, if number is greater than 0 then your answer is 1. So here our x1 is 1, it is greater than 0, so our answer will be 1. And f of x2, that is f of 2. Now f of 2 is greater than 0, so if the number is greater than 0 then your answer is 1. So in this case also answer is 1. So x1 not equal to x2, but fx1 and fx2 are same, and so we say the function is not 1 1। अब यहाँ पर जो डेफिनेशन दिया गया है वो डेफिनेशन से ही आपको रेंज पता चल जाएगा। फॉर एवरी ग्रेटर देन 0, for every real number which is greater than 0, your answer is fixed 1। Okay, if your number is 0 then your answer is 0, and if the number is less than 0 then your answer is -1। So your answer depend on sign of the number। So we have only three elements in range, and it is -1, 0 and 1, and our codomain is given R, so it is not same as R, and so this function is not onto। okay, तो आपको बोला गया था neither 1 1 nor onto। next one, set A containing 1 2 3, set B containing 4 5 6 and 7। here f is given by 1
1 for order pair, then order pair 2 and 5 and order pair 3 and 6 be a function from a to b, show that f is 1 1. तो आपको जो f दिया गया है उसमें सबसे पहली ऑर्डर पेयर है 1 4, तो ऑर्डर पेयर 1 4 है, इसका मतलब है f of 1 is equal to 4. Then second order pair is 2 5, it means f of 2 is 5, 5 is image of 2. And third one is 3 6, that is image of 3 is 6. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 and 3 जो हमारे डोमेन के एलिमेंट हैं वो तीनों नंबर है, उनके लिए डिफरेंट आंसर है, बराबर। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे x1 नॉट इक्वल टू x2, डिफरेंट नंबर अगर हम सिलेक्ट करेंगे डोमेन से, देन image is also different. x1 not equal to x2 implies fx1 not equal to fx2, and therefore f is 1 1 function. Okay, so this one is our question number 6. Now on next, number 7, and number 7 is in each of the following whether the function is 1 1 or onto. आपको चेक करना है कि भाई फंक्शन 1 1 है या onto है। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट है वो है फंक्शन फ्रॉम R to R and it is defined by fx is equal to 3 minus 4x. तो 1 1 चेक करते हैं। 1 1 चेक करने के लिए let x1 x2 belongs to R. Here R means domain of function, and f of x1 is equal to f of x2. हम प्रूव करेंगे x1 equal to x2. अगर x1 equal to x2 मिल गया तो फंक्शन 1 1 है, अगर नहीं मिला तो वो मैनी 1 होगा। तो what is f of x1? 3 minus 4x1. f of x2 is 3 minus 4x2. You can cancel 3 from left and right, and so minus 4x1 is equal to minus 4x2. Minus 4 cancel from left and right, and then we get x1 equal to x2, and therefore f is 1 1, बराबर। ये जो फंक्शन है वो 1 1 है। अब हम चेक करेंगे ऑन टू। Now here our domain and codomain is R, so we have to find range of function using fx equal to y, जो हम onto की another definition करते थे कि आप ये बताओ कि आपके कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी किसी ना किसी नंबर की इमेज है अंडर f, बराबर। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा ऑन टू प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेट y बिलोंग्स टू r, और यहाँ पर मैं थोड़ा क्लियर करता रहता हूँ कि ये भाई हम कोडोमेन की बात करते हैं, बराबर, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये दोनों r है। तो हम जो 1 1 चेक करते हैं ना, तब हम नंबर जो सिलेक्ट करते हैं वो डोमेन से सिलेक्ट करते हैं, एंड जब हम ऑन टू प्रूव करने लगते हैं तो जब नंबर हम सिलेक्ट करते हैं वो कोडोमेन से लेते हैं। तो लेट y बिलोंग्स टू r एंड fx इक्वल टू y। अब हमारा टारगेट क्या है? तो हमको कोडोमेन में एक नंबर दिया गया है y। हमको ये प्रूव करना है कि ये जो कोडोमेन में y है वो किसी नंबर का इमेज है, और वो नंबर कहाँ पर होना चाहिए? डोमेन में होना चाहिए, है ना। ये हमको प्रूव करना है। तो अभी हम चेक करेंगे कि अगर fx इक्वल टू y लिखते हैं तो x क्या है और क्या वो नंबर डोमेन में है या नहीं, वो हमें चेक करना है। तो fx इक्वल टू y, व्हाट इज fx? 3 माइनस 4x इक्वल टू y। अब यहाँ से हम x को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो 3 माइनस y is equal to 4x, and therefore x is equal to 3 minus y upon 4। अब आपको ये देखना है क्या ये रियल नंबर है। अब मैं क्यों रियल नंबर बोल रहा हूँ? क्योंकि आपका डोमेन है ना वो r दिया गया है, इसलिए। हाँ, चलो, तो y क्या है? y is real number, 3 is also real number। so real number minus real number, definitely it is real। real number upon
4 is also non-zero number, so definitely this ratio is real, so belongs to R। तो हमने क्या प्रूव किया, y है वो कोई एक नंबर है जिसका इमेज है, वो कौन सा नंबर है, 3 माइनस वाई अपॉन 4, एंड इट इज इन डोमेन ऑफ फंक्शन। बराबर, आप चेक भी कर सकते हैं। देखो अगर हम फाइंड करने जाएंगे f ऑफ 3 माइनस वाई अपॉन 4, then by definition is 3 minus 4, x is 3 minus y upon 4, 4 cancel, 3 minus 3 minus minus plus y is equal to y। तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारा जो नंबर हमने सिलेक्ट किया था फ्रॉम कोडोमेन, वो एक डोमेन के नंबर की इमेज है, बराबर, एंड दैट्स व्हाई वी से द फंक्शन इज ऑन टू, दिस फंक्शन इज ऑन टू। बराबर, जो आपके कोडोमेन में जितने भी नंबर हैं वो सभी नंबर्स किसी ना किसी नंबर की इमेज होंगे फ्रॉम डोमेन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 2, and here it is given function from R to R defined by fx equal to 1 plus x square। तो ये quadratic form है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x1 is equal to minus 1, x2 is equal to 1। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर आपको सिंपल तरीके से याद रखना है तो फंक्शन R to R, I am saying function R to R, and if fx is quadratic then it is neither 1 1 nor on 2। अगर फंक्शन R to R है और अगर आपको क्वाड्रेटिक दिया है तो वो ना तो 1 1 होगा ना तो वो on 2 होगा इन जनरल। हाँ, R to R, यहाँ पर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक दे दे वो कभी 1 1 भी नहीं होगा, कभी on 2 भी नहीं होगा। R to R डोमेन होना चाहिए, डोमेन एंड कोडोमेन। चलो x1 माइनस 1, x2 माइनस x2 प्लस 1, अब हम फाइंड कर लेते हैं f ऑफ माइनस 1। तो f ऑफ माइनस 1 इज 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर, 1 plus minus 1 square, that is 1 plus 1, 1 plus 1 is 2। f of 1 is 1 plus 1 square, that is 1 plus 1, 1 plus 1 is 2। So here x1 not equal to x2, but f of x1 is equal to f of x2, and therefore this function is not 1 1। नाउ फॉर ऑन टू, अब इसका हम रेंज फाइंड कर लेंगे। तो वी नो वन थिंग, एंड इट इज x square is always greater than equal to 0। this one is true for every x belongs to R। here our definition is 1 plus x square, so if I add 1 then inequality remains as it is because 1 is positive number। so 1 plus x square is greater than equal to 1 plus 0। what is 1 plus x square? It is formula for our fx। so fx is always greater than or equal to 1। so range of function is closed from 1, open from infinite। it is not same as R because our codomain is given R, and therefore this function is not onto। बराबर, ये function onto भी नहीं होगा। now for next one, number 8 and number 9। बराबर, दो सम एक साथ दिए गए हैं। A and B be sets show that f from A cross B to B cross A such that f of order pair AB is equal to order pair BA is bijective function। इस बार आपको प्रूव करना है कि ये जो 8 नंबर में फंक्शन दिया गया है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करना है तो हम डोमेन में से दो नंबर सिलेक्ट करेंगे। तो लेट A1 B1 and A2 B2। one pair order pair is A1 B1 and second order pair is A2 B2 from domain of function। now f of A1 B1 equal to f of A2 B2, क्योंकि हमारा जो डेफिनेशन है वो कुछ ऐसे है, fx1 equal to fx2 and prove x1 equal to
x2। तो हम क्या करेंगे, f of a1 b1 इक्वल टू f of a2 b2 हमने एक्सेप्ट किया और हम प्रूव करेंगे ऑर्डर पेयर a1 b1 इक्वल टू ऑर्डर पेयर a2 b2। तो definition is f of ab, f of ab is given order pair ba, so f of order pair a1 b1 is what, b1 a1, and f of order pair a2 b2 it gives b2 a2। अब ये जो ऑर्डर पेयर होता है वो इक्वल कब होता है, व्हेन फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज b1 एंड b2 इक्वल है, एंड साथ में आपके सेकेंड दैट इज a1 एंड a2 भी इक्वल है तो। ओके अब आपका जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर था वो फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या था, a1 b1। आपने ऊपर ये बताया कि भाई a1 इज सेम एज a2, तो a1 की प्लेस पर हम a2 लिख सकते हैं, एंड b1 इज सेम एज b2, तो b1 की प्लेस पर हम b2 लिख सकते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था f ऑफ a1 b1 इक्वल टू f ऑफ a2 b2, हमने प्रूव किया है a1 b1 order pair a1 p1 equal to order pair a2 b2 and therefore the function is 1 1। बराबर। अब आते हैं ऑन टू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोडोमेन में से एक ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो लेट a belongs to capital A, b belongs to capital B, and therefore order pair BA belongs to B cross A, and order pair AB belongs to A cross B। बराबर, ये हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन से लिख रहे हैं। तो BA belongs to B cross A, that is it is element of codomain, and AB is element of A cross B, A cross B is our domain। अब हम देखते हैं what is f of AB। तो our definition is f of AB that is BA। तो ये जो BA है वो किसका इमेज होगा, ऑर्डर पेयर ए बी का, और हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि भाई ऑर्डर पेयर ए बी इज मेंबर ऑफ ए क्रॉस बी। सो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन वी हैव एन प्री इमेज इन अवर डोमेन। बराबर, आपके जितने भी ऑर्डर पेयर हैं कोडोमेन में वो सभी कोई एक एलिमेंट है डोमेन में जिसका ये इमेज है, and that's why the function is onto। number 9 is f is given from n to n defined by fn। जैसा मैंने पहले भी एक बार बोला था कि ये भी एक पीसवाइज फंक्शन है, डेफिनेशन डिफरेंट है, n plus 1/2 if n is odd। बराबर, ऑड नंबर के लिए आपको अलग से डेफिनेशन दिया गया है, एंड n/2 if n is even। तो ये यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं है, पीसवाइज फंक्शन है। स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो यहाँ पर आपको डोमेन क्या दिया गया है, डोमेन ऑफ फंक्शन इज गिवन n 1 2 3 4 एंड सो ऑन। चलो सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं n equal to 1। now this one is odd number, and if it is odd number then what is f of 1? so formula is n plus 1/2 for odd number। so here 1 plus 1 upon 2, that is 2/2, and 2/2 is 1। now we select another number 2। चलो यहाँ पर n1 लिख देते हैं, बराबर, जिससे आपको ऐसा ना लगे कि ये दोनों में n क्यों लिखा। तो this one is even number, and if this one is even number then for even number formula is n/2। so here 2/2 and 2/2 is 1। so you can see n1 and n2 are different, n1 and n2 are different, but f of n1 is same as f of n2, and so this function is not 1 1। okay, ये क्या लिख दिया मैंने, not 1 1। so now for onto, what is domain of function?
डोमेन ऑफ फंक्शन इज n। तो जैसे मैंने बोला था, अगर हमको डोमेन n या z दिया गया तो हम रेंज फाइंड कर लेंगे, बराबर। यहाँ पर एक और नंबर नाउ f1, f1 number is odd, so it is 1 plus 1 upon 2, which gives 1. f2, 2 is even number, so 2 by 2, 2 by 2 is 1. Then for next number f of 3, which is odd, so it is 3 plus 1 by 2, 4 by 2 is 2. Then we find f of 4, which is even, so 4 by 2, which gives 2. Then find f5, odd number, so 5 plus 1 upon 2, 6 by 2, which gives 3. f6, even number, 6 by 2, which gives 3, and so on, बराबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका रेंज मीन्स सेट ऑफ आंसर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 सभी सीक्वेंस में ही चल रहे हैं और कोई नंबर बीच में नहीं ब्रेक कर रहा है। तो 1 2 3 एंड सो ऑन, दैट इज इट इज एग्जैक्टली सेम एज योर कोडोमेन, एंड सो दिस फंक्शन इज ऑन टू। ओके, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं था, बट यस इट इज ऑन टू फंक्शन। नाउ नंबर 10 11 12, ओके चलो। तो फर्स्ट वन इज हियर सेट A is given r minus singleton 3, set B is given r minus singleton 1. Consider the function f from A to B, fx equal to x minus 2 upon x minus 3 is f11 and on to justify your answer. ओके यहाँ पर आपको A दिया गया है r माइनस सिंगलटन 3, बराबर, और B दिया गया है आपको r माइनस सिंगलटन 1। चलो तो स्टार्ट करते हैं। लेट x1 x2, हम 1 1 चेक कर रहे हैं। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू A एंड f of x1 is equal to f of x2. Now f of x1, x1 minus 2 upon x1 minus 3, and f of x2 is x2 minus 2 upon x2 minus 3. If we simplify, means cross multiplication, then x1 into x2, x1 into 3, 3x1 minus 2 into x2, and minus minus plus 3 to the 6. Here also cross multiplication, so x1 into x2, x1 into minus 2, which gives minus 2x1, minus 3 into x2, minus 3x2, and minus minus plus 3 to the 6. x1 x2 and plus 6 cancel, and now 3x2 minus 2x2 is equal to 3x1 minus 2x1। x1 के हमने टर्म एक साइड और एक साइड x2 के टर्म लिख दिए, तो 3x2 minus 2x2 gives x2 and 3x1 minus 2x1 gives x1. So fx1 equal to fx2 implies x1 equal to x2, and therefore f is 1 1 function. Okay, bhai. Now for onto, so for onto, here our domain and codomain is in form of r, बराबर, r माइनस सिंगलटन 3 एंड r माइनस 1। तो हम एफ एक्स इक्वल टू वाई से प्रूव करेंगे कि हर एक जो नंबर है आपके कोडोमेन में वो किसी का इमेज है। तो लेट y बिलोंग्स टू b एंड एफ एक्स इक्वल टू वाई, मीन्स हमारे पास एक नंबर है y जो कि कोडोमेन का है। हमको फाइंड करना है कि क्या वो किसी डोमेन के नंबर का इमेज है या नहीं है, वो हमको चेक करना है। तो एफ एक्स इक्वल टू वाई, आवर फॉर्मूला इज एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। यहाँ से हम एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे
और देखेंगे कि x की वैल्यू क्या मिल रही है हमको। तो x माइनस टू इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस थ्री वाई। तो x minus xy is equal to 2 minus 3y, and therefore x is equal to 2 minus 3y upon 1 minus y. x is real number, तो x को डिफाइन करने के लिए, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, अगर x पॉसिबल है उसके लिए क्या होना चाहिए, आपका डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, बराबर। तो डिनोमिनेटर अगर जीरो नहीं होता, अगर y का वैल्यू वन नहीं होगा, तो आपका x कहाँ पर हो जाएगा, रियल नंबर में एग्जिस्ट हो जाएगा। तो y नॉट इक्वल टू वन, देन x एग्जिस्ट, बराबर, x एग्जिस्ट हो जाएगा। तो देखो आपको क्या दिया गया था, y बिलोंग्स टू b दिया गया था, y बिलोंग्स टू b, और b एक्चुअली था क्या, r माइनस सिंगलटन वन। तो हाँ भाई, y एक्चुअली वन नहीं था। तो देखो आप y नॉट इक्वल टू वन, देन x एग्जिस्ट। तो ये तो इश्यू नहीं है। अब एक और चीज देख लेते हैं, यहाँ पर आपको डोमेन में दिया गया है r माइनस सिंगलटन थ्री, तो हम ये भी चेक कर लेते हैं कि ये जो रेशियो है ना, इसका वैल्यू थ्री नहीं होगा, क्योंकि डोमेन में थ्री नहीं है, तो ये जो रेशियो है वो x का वैल्यू है, तो वो वैल्यू थ्री भी नहीं होनी चाहिए ना। तो वो भी चेक कर लेते हैं, बराबर। टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई इक्वल टू थ्री, ये पॉसिबल है या नहीं हुए हम चेक कर रहे हैं। तो टू माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री माइनस थ्री वाई, एंड देयरफॉर टू इक्वल टू थ्री। अब आप समझ सकते हैं दिस वन इज नॉट पॉसिबल, बराबर, दिस वन इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये जो रेशियो है ना, ये थ्री भी नहीं है। तो आपके डोमेन का जो भी नंबर दिए हैं वही ये नंबर है, और y का वैल्यू वन भी नहीं ले सकते हम। तो इट मीन्स दिस फंक्शन इज ऑन टू, बराबर। हमने ये प्रूव कर लिया कि y जो आपके कोडोमेन में एलिमेंट है, वो डोमेन के एक एलिमेंट का इमेज है, और वो जो भी एलिमेंट है वो डोमेन में है, वो ऐसे हमने प्रूव भी कर लिया है। सो दिस फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू बोथ। ओके, चलो आगे चलते हैं। हाँ चलो, एक चीज में यहाँ से कुछ लिख दूं। अगर आपको फंक्शन दिया गया है r माइनस, पहले मैं जरा डेफिनेशन लिख दूं, बराबर, और उसके हिसाब से डोमेन लिखूं। ax प्लस बी, एफ एक्स इज इक्वल टू ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। अब डिनोमिनेटर में क्या लिखा है मैंने, सी एक्स प्लस डी। तो सी एक्स प्लस डी डिनोमिनेटर में है, तो वो जीरो नहीं होना चाहिए, दैट इज सी एक्स प्लस डी नॉट इक्वल टू जीरो। सो एक्स इज नॉट माइनस डी अपॉन सी, बराबर। बस ये इसलिए मैंने नहीं लिखा था कि दिखाऊं आपको कि भाई डिनोमिनेटर को जीरो नहीं ले सकते, सी एक्स प्लस डी नॉट इक्वल टू जीरो, एंड सो सी एक्स इज नॉट माइनस डी, सो एक्स इज नॉट माइनस डी अपॉन सी। अब यहाँ पर हम कोडोमेन जानबूझ के आर लिखते हैं। ये टाइप का जो फंक्शन होगा लीनियर होना चाहिए, ऊपर भी लीनियर और नीचे भी लीनियर फॉर्म में है। ये टाइप का जो फंक्शन होगा, इसका रेंज हो जाएगा आर माइनस, आपको न्यूमरेटर में जो एक्स का कोएफिशिएंट है ना, वो कौन है, ए, और डिनोमिनेटर में सी एक्स प्लस डी, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, सी। बस वो दोनों का रेशियो आप माइनस कर लेना, यही इसका रेंज होगा। बट मैंने बोला यहाँ आर माइनस एक एलिमेंट है, क्योंकि वो डिनोमिनेटर के हिसाब से हमने लिखा है, तो इसका रेंज यही होता है। अगर आपने ये क्वेश्चन में भी देखा होता, तो देखो यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट वन है और यहाँ पर भी वन है, तो आपका रेंज क्या आया था, आर माइनस सिंगलटन वन। दिस वन इज ट्रू इन जनरल। नाउ टर्न ऑफ 11, फंक्शन इज फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज टू फोर। ये बाइक्वाड्रेटिक फंक्शन है।
अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू नहीं होता तो बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन भी 1 1 एंड ऑन टू नहीं होगा फॉर आर टू आर. So for 11, f of minus 1 is minus 1 raised to 4, which gives 1. f1, f1 is 1 raised to 4, it is 1. So here numbers are different, but answer same. So we can say this function is not 1 1. Okay, and fx is x raised to 4, x raised to even power. So definitely it is always greater than equal to 0. So range of function is closed from 0, open from infinite. It is not same as your codomain, and so this function is not on to. I think ये simple question है तो शायद मैंने बहुत जल्दी लिख दिया है. So this function is neither 1 1 nor on to. Now 12. तो 12 वैसे तो हम चलो नंबर 12. Here fx equal to 3x. अब एक्चुअली ये आप ग्राफ से भी कर सकते हैं बराबर. fx equal to 3x, it is a linear, so graph is a straight line और इसका रेंज आर टू आर होगा. अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ ओरिजिन से निकलता हुआ और y एक्सिस के नियर, क्योंकि इसका जो स्लोप है ना वो 3 है, ऐसा इसका ग्राफ होगा. तो हम वो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते थे 1 1 के लिए, उससे बोल सकते हैं. और ये मिनिमम जा रहा है माइनस इनफाइनाइट, मैक्सिमम जा रहा है प्लस इनफाइनाइट. सो एक्चुअली इट इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ बराबर. ये हमने ग्राफ से किया. अगर आपको जनरल में करना है तो x1 एल्जेब्रिकली प्रूव करना है तो x1 x2 बिलोंग्स टू आर. fx1 इज इक्वल टू fx2. fx1 मतलब 3x1, fx2 मतलब 3x2. 3 3 cancel from left and right, which gives x1 equal to x2, and x1 equal to x2 means this function is 1 1. For on to, let y belongs to r. This one is codomain of function, and fx equal to y. अब वापस हम क्या करेंगे, y में हमने मतलब कोडोमेन में एक एलिमेंट लिया है और हम चेक करेंगे कि वो कोई डोमेन के एलिमेंट की इमेज है. तो fx equal to y, that is 3x equal to y. 3x equal to y, so x equal to y by 3. अब यहाँ पर देखो y क्या है, रियल नंबर. डिनोमिनेटर में कौन है, 3. तो रियल नंबर अपॉन रियल नंबर, डेफिनेटली इट इज रियल नंबर. तो जो हमने x सिलेक्ट किया था वो क्या है, y by 3, एंड यस इट इज रियल नंबर. और आप ये भी देख सकते हैं कि f of y by 3 क्या होगा. तो f of y by 3 formula is 3x, so it is 3 into y by 3, which gives y. So y is image of y by 3, which is member of our domain, and so this function is onto बराबर. तो मैंने पहले ग्राफ से बोला था और ये हमने एल्जेब्रिकली किया. फंक्शन इज 1 1 and onto both. Okay, so it is end of our exercise